Assalamu alaikum, beta. In this video lecture, I will deliver the lecture on viral infections of the skin. Okay, the cutaneous viral infections, and beta, it's a big list of infections. And out of all those viral infections of the skin, at number one is infection by human papilloma virus, which produces warts on your skin. So viral warts on the skin, they are caused by human papilloma virus. Different type of warts are there which are caused by the human papilloma virus. They include number one common warts. Hmm. They include common warts. Number two plantar warts and mosaic warts. At number four is facial warts, also called filiform warts. Anogenital warts, also called condyloma acuminatum. You must be familiar with these names because I hope you are done with your microbiology. Plain warts, okay. So one, two, three, four, five, and six. We have to learn few things about all these types of warts, right? Starting with common wart, then you see beta this common wart is also called Verruca vulgaris. Okay, and this type of wart is very much smooth एंड स्किन कलर्ड पेप्यूल राइट इनिशियली क्या होता है बेटा जो कॉमन वार्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है पेप्यूल्स बनते हैं वो जो पेप्यूल होता है बिल्कुल स्किन कलर का होता है और इनिशियली स्मूथ होता है बाद में चल के वो रफ हो जाता है वो हाइपर केराटोटिक हो जाता है यानी थिक हो जाता है और वो वार्टी हो जाता है दैट इज इट बिकम्स मोर रफर ओके लेट मी शो यू बेटा in this common wart right here can you see in this picture beta. This is the common wart. Isn't it very much smooth? It is smooth. Isn't it skin colored? It is skin colored, and it is also a little outgrowth from the skin, like a papule. Okay, this is the initial stage. But later, what will happen? This common wart will become more rough, hyperkeratotic. Okay, so this is about beta common warts. They are asymptomatics as they are asymptomatic by the mercy of God. They are not painful, so it's a good thing. They are asymptomatic and they do appear on the hands. Most commonly, they appear on hands, by the way, but they can also appear on your face, on your genitals, and limbs. Right? Most common side you will come to see is hand. After common wart is plantar wart. Okay, also called Verruca plantaris. Verruca plantaris are plantar warts. They are slightly protruding from, slightly protruding rough surfaces. They are having horny rim that are horn-like, scaly rims, and they are painful on walking. Let me tell you and let me show you what I'm trying to deliver. Can you see, beta? This is a plantar wart, and this plantar wart is on the plantar surface of the foot of the toe, and can you see this is like a slightly protruding rough surface and it is having horny or scaly rims. Can you see beta its rims? They are very much scaly, having horns, right? So this is the plantar wart. It is actually slightly protruding out. It is a rough surface you can see, and it is having scaly rims. Okay, and it is painful on walking compared to common warts. Common warts were asymptomatic, but these plantar warts, remember, they are painful on walking. And can you see beta? And can you see some capillary loops? Capillary loops in the center of the in the center of the plantar wart. And these capillary loops are very much important to distinguish this lesion from corns. Corns are also beta skin lesions which are very much similar to this lesion, plantar wart. Corns are very much similar to plantar warts in the appearance, but then how you distinguish between plantar wart and corns? These capillary loops. These capillary loops are present in the plantar wart and they are absent in case of corns, right? This is beta your plantar wart, and then is the mosaic wart. Mosaic wart
They are mosaic like sheets of warts. They are not single protrusions. Mosaic warts are not single protrusions. There are number of warts. There are sheets of warts in the mosaic pattern. It's like iceberg in the sea. It's like iceberg in the sea. Okay, let me show you these mosaic warts. Can you see this picture, beta? Can you see? Isn't it more looking like iceberg on the sea? ये बिल्कुल शीट के जैसे ना बेटा, ये देखें. These are mosaic warts. Aren't they more like a sheet? Okay. So mosaic warts are like this. Mosaic like sheet of warts. This is mosaic like sheet of warts. Okay. So this is mosaic wart. And then is facial wart. Facial wart, they appear on your face and they kind of disturb your cosmetics, and they are also called filiform wart. If I show you quickly in this picture, yeah, can you see better this on the eyelashes? This is filiform wart. This is facial wart. They do appear on the face. Okay. And then is anogenital wart, which appear on your anogenital skin. They are also called condyloma acuminatum. And these anogenital warts are very much harmful because they can later develop into malignancy, right? At number 6 is beta plain warts. Okay, plain warts, as the name indicates, and you can understand that they are going to be very much plain on their surface. So they are smooth, flat topped papules. They appear on the face and the back of the hand. Let me tell you, let me show you. They are very much smooth. Can you see in this picture? These are plain warts. Okay, if I just zoom into the picture and you see how plain they are, how flat topped they are, and they are actually flat top papules. They are very much smooth, and their upper top is their top is very much smooth. Okay, they appear on the face and back of the hands as well. So let me quickly recap all the types of these viral warts. Number one are the common warts, which are initially very much smooth skin colored papules. Later they remain the same, but the only difference is they become little rougher and more thicker. Okay, hyperkeratotic. And beta plantar warts, they appear on the plantar surface, and they are like slightly protruding rough surfaces from skin. The rims of that lion plantar warts, if I again very quickly show you, you see here. Can you see the rims बेटा? अगेन स्केली बॉर्डर्स हैं इसकी, ठीक है, ये पेनफुल होती हैं, और इसके सेंटर में कैपिलरी लूप्स हैं बेटा, जो कि इसको हॉर्न से डिफरेंट बनाते हैं. इसके अलावा मोज़ेक वार्ड का नाम उसके शेप पे रखा हुआ है, क्योंकि जो मोज़ेक वार्ड्स होते हैं बिल्कुल किससे रिजेंबल करते हैं? जस्ट लाइक अ मोज़ेक, द आइसबर्ग इन द सी. ओके, मोज़ेक वार्ड के अलावा बेटा फेशियल वार्ड्स, जिनको हम फ्रीफॉर्म वार्ड्स भी कहते हैं, दे डू अपीयर ऑन द फेस. Okay, and anogenital warts, very much nasty. They are also called condyloma acuminatum. And at number 6 is flat top papules on the face, on the back of the hand. They are plain warts, right? Okay, and let me tell you beta now that how these viral warts are transmitted. Actually, these warts are produced by human papilloma virus, na? So it's a viral infection actually, and it is transmissible. It can transmit from one person to another person by direct contact with living or shed skin. अगर मेरे हाथ पे वाट है और वो इन्फेक्टेड है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, तो अगर मैं उस लिविंग स्किन के साथ या उसकी अगर वो स्किन शेड हो जाए, उसके साथ अगर कांटेक्ट में आ जाऊं, तो वो वायरस मेरी बॉडी में भी इंटर हो सकता है, एंड आई कैन आल्सो डेवलप वायरल वॉट्स. And also beta sexual activity can lead to transmission of this virus. Sexual activity, और जाहिर है बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी से जो वायरस की ट्रांसमिशन होगी, एंड इट इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद एनोजेनाइटल वार्ट्स, राइट? Anogenital warts, na? Anogenital warts are those warts which appear on your anogenital skin. So when you are in sexual activity, you are actually concerned with these type of warts. Okay, so sexual activity can also lead to transmission of these this actually human papilloma virus infection. Okay, what is the prevention program beta? How can you prevent developing this viral infection? There is vaccine available.
for boys, for girls, for both. Vaccination is available before the onset of their sexual activity. In around age of 11 to 13 years, this is the age of onset of sexual activity, and this time you need to get vaccinated. You need to get vaccinated for boys and girls both. And this is the prevention program, beta. And how can you manage if, let's suppose, somebody has developed the viral warts? It can be common wart, it can be plantar wart, mosaic wart, facial wart, genital wart, or plain wart, whatever wart is. Do you have any management program? Yes, we have got some management program. But before we talk about those ideas, you must have some idea about the common thing in all the viral infections, that is, viral infections do resolve their own. So there is a spontaneous resolution of the human papilloma virus within few years. Okay, it is most possible that if you develop the wart on your skin by human papilloma virus, it is very much possible that it spontaneously resolves in few years. But if, let's suppose, it does not resolve, then you have got some management plans that include: number one, effective destruction of the wart by applying salicylic acid or salicylic acid plus lactic acid. Okay, and the next step is cryotherapy. 2 to 4 times in a week is a procedure especially applied in case of filiform warts, which are facial warts, which I showed you in the picture, which was on eyelashes. Okay, filiform वार्ड के लिए स्पेशली क्रायोथेरेपी प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है बेटा. और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रो डायसेक्शन है, especially for what type of viral warts? Periungal and subungal warts. Periungal, that is around the nail, subungal, that is beneath the nail. Okay, so these are the management plans which you can follow. Applying salicylic acid और acetic acid के साथ मिला के, सॉरी, लैक्टिक एसिड के साथ मिला के. और इसके अलावा बेटा क्रायोथेरेपी भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रोडाइसेक्शन भी अवेलेबल है. ठीक है, और कुछ और बेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है विच आर नॉट efficiently followed, but you can still keep it in your mind for your exam purpose, that are uh, topical formaldehyde, okay, podophylotoxin PDT, trichloroacetic acid, कैथाड्रिन ड्रग, और उसके अलावा रेटिनोइड्स अप्लाई कर सकते हैं. इंट्रालेजनल इंजेक्शन ऑफ बिलियोमाइसिन, ये इंजेक्शन डायरेक्टली वार्ड के अंदर लगाई जाती है. इंटरफेरोन का इंजेक्शन, एंड यू नो बेटा इंटरफेरोन्स आर वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस. एंड कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन ऑफ द लायन, जिस जगह पे वार्ड है उसकी कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन कर दें बाय यूजिंग डाइफेंसिप्रोन or imiquimod or podophylotoxin PDT. Okay, these are the other latest options you have available for the treatment of warts. Okay, previously I told you cryotherapy is also a very good and effective way of controlling filiform warts, but cryotherapy has got some complications like scarring of the skin, dystrophy of nail, and tendon rupture. So beta, you need to keep these things in your mind for your exam purpose. Okay, so yeah, this is all about the viral warts caused by human papilloma virus. Another viral infection is beta your molluscum contagiosum. It is also a viral infection of the skin. What virus causes this? It is DNA pox virus. Okay, especially it affects children over 1 year age. एक साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और खास करके वो बच्चे बेटा जिनमें एटोपिक डर्माटाइटिस है या फिर वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं. ठीक है, एटोपिक डर्माटाइटिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्जिमा. ठीक है, और मुमकिन है कि बच्चे को एटोपिक डर्माटाइटिस हो, या एटोपिक डर्माटाइटिस ना सही वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो किसी वजह से, जैसे HIV की वजह से. तो बेटा उसमें इस वायरस के डेवलप होने का चांस ज्यादा होता है, एंड यू कैन डेवलप मोलस्कम कंटेजियसम. Okay, once this virus has entered into your body and infected your body, what the heck is going to happen onto your skin? What type of lesion will appear on your skin? ये ठीक है, ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ, ये स्किन का इन्फेक्शन कराएगा, तो फिर बेटा क्या लेयन बनेगा स्किन पे? यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट ना. द लेयन विच अपीयर ऑन द स्किन, लेट मी टेल यू अबाउट दैट लेयन, that papules appear on the skin. Yeah,
skin colored papules appear on the skin. Skin colored papules, just like this is a papule. Okay, this is a papule, and it is skin colored. Okay, it is dome shaped. It is dome shaped and umbilicated and having skin color. And in the center of this papule there is a central punctum, a little dimple in the papule. Okay, let me show you beta what I am trying to say. Okay, can you see beta? This is the lesion on the skin which occur in case of molluscum contagiosum. Isn't it a papule? It is a papule beta. And also it is skin colored, it is dome shaped, it is dome shaped, it is umbilicated, and in the center of the lesion, if I just zoom into the picture, and can you see in the center of the lesion, this is what? This is a central punctum, a little dimple in the lesion. Okay, so this is the characteristic lesion of molluscum contagiosum. And the site where sorry, the site where these lesion appear on the skin are sites of apposition. बॉडी में वो जगह हैं जो एपोजिशन में है एक दूसरे के साथ, वहां पे ये इस वायरस के लेयन बनते हैं. साइट्स ऑफ एपोजिशन लाइक जो जो बॉडी सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में है, जैसे कि साइड ऑफ द चेस्ट एंड इनर आर्म, lateral part of the chest, side of the chest or inner arm, they are very much close to each other. Na? They are very much close to each other and they are in apposition. So those body parts which are in apposition, these are the actually sites where lesions appear in case of molluscum contagiosum, right? By the way, it's a viral infection, so it actually resolves itself. Spontaneous resolution हो जाती है इसकी भी कुछ महीनों में, spontaneous resolution in few months. But if it does not resolve itself, then you have got some procedures to get rid of it. That include gentle squeezing of the lesion with forceps. आप forceps उठाएं और उसको gently squeeze करके निकाल दें. दूसरा ये है कि इसके ऊपर आप टॉपिकली जो है सैलिसाइलिक एसिड अप्लाई करें, ठीक है, या टॉपिकली आप पोडोफाइलिन अप्लाई करें, कैथारोडिन ड्रग्स यूज करें, या फिर उसके अलावा आप ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. और उसके अलावा बेटा क्रायोथेरेपी इज द प्रोसीजर विच यू आर यूजिंग इन केस ऑफ वायरल वार्ड्स एंड यू कैन यूज इट हियर एज वेल, राइट? Curettage is another procedure in which you just cut down this lesion from the skin. Okay, so beta, this is all about the molluscum contagiosum caused by a DNA virus called pox virus, right? After this molluscum contagiosum, let me tell you another lesion, another viral infection of the skin, that is ORF. ORF, also called contagious ecthyma or contagious pustular dermatitis. Contagious ecthyma और contagious pustular dermatitis, जिसको हम ORF को ORF ही कहते हैं. it has no abbreviation, it is just ORF. Okay, so this ORF is the skin infection caused by which virus? Which virus beta? Parapox virus. Okay, एंड ये वायरस बेटा खास करके इसका ऑक्यूपेशनल रिस्क होता है. ऑक्यूपेशनल रिस्क फॉर दोज हु वर्क विद शीप्स एंड गॉट्स. ओके, जो लोगों का ऑक्यूपेशन ही यही है कि वो भेड़ बकरियों के साथ काम करते हैं, तो उन भेड़ बकरियों में से, शीप्स और गॉट्स में से ये वायरस जो है इंसानों में ट्रांसमिट होता है. और बेटा इंसान जो है, लेट सपोज उनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि उनको गोट्स और शीप्स के साथ काम करना पड़ रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि ट्रांसमिशन ऑन एनिमल से ह्यूमन बॉडी में हो. ठीक है, एंड द वायरस एंटर थ्रू फिंगर स्किन. ओके, और जैसे ही फिंगर स्किन में एंटर होता है और स्किन पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन और इतना ज्यादा नेक्रोसिस होने लगती है. ठीक है, और बाय द मर्सी ऑफ अलमाइटी इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है और 2 से 6 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाता है इन्फेक्शन. ठीक है, ओके, कैन यू सी दिस बेटा? Can you see? This is the skin of the thumb, and you can see lots of inflammation and necrosis. This is the typical ORF infection, okay, by parapox virus, and there is no treatment required until any secondary infection occurs. अगर किसी को ORF होता है, इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, स्किन पे इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होती है, उसको ट्रीटमेंट लेने की ऐसा जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ,
अगर उस लेजन के ऊपर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है अगर स्किन पे इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस होगी तो स्किन एक्सपोज होगी और उसके ऊपर बैक्टीरिया के अटैक करने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी हो जाए तो फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी मैं आसानी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा दूं, वैसे बात बहुत आसान है, लेकिन you see, if let's suppose this is finger, okay, and here appears inflammation and necrosis. This is inflammation and necrosis, okay, and we now understand this is ORF infection जिसमें स्किन पे इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। इस केस में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो फिर कब जरूरत है ट्रीटमेंट की? अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस है ना बेटा। अच्छा, ये जाहिर है जब इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस होगी तो स्किन एक्सपोज हो जाएगी और यहाँ पे बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इसके ऊपर जब बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी हो जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब ये देख के मुझे कैसे पता चला कि ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस नहीं है, यहाँ पे सुपर इन्फेक्शन भी हो चुका है बैक्टीरिया का। बेटा पस फॉर्मेशन हो रही है। पस फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। पस फॉर्मेशन हो रही है ना, तो आई अंडरस्टूड दैट देयर मस्ट बी सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब मुझे बताओ इस केस में ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है? इस केस में ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शन नहीं है बेटा, इसके ऊपर बैक्टीरियल अटैक भी हो चुका है, इस वजह से इतनी पस बन रही है और इस केस में अभी आपको एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, हाँ आप पहले से टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स लगा दें ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही ना। और अगर हाँ आप टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स नहीं लगाते, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, स्किन पे इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस चल रही है, और अगर आपने एंटीसेप्टिक लगा दिया गुड, नहीं लगाया तो फिर अगर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो गया ऊपर से तो फिर देन द लेजन लुक्स लाइक दिस एंड यू नीड द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज ORF provokes erythema multiforme. If you leave ORF untreated, it will develop into erythema multiforme. Erythema multiforme is a type of skin lesion in which target-like lesions appear on the skin, just like this. Isn't it looking more like a target area? So इस तरह के स्किन पे लेजन्स बनते हैं। इस पे बेटा एक मेरी तफसीली वीडियो होगी इंशाल्लाह। I will deliver the lecture on erythema multiforme and you will then better understand. Okay, are you clear with ORF? Are you clear with this viral infection beta? Right. After ORF is another viral infection in children especially, and you are very much familiar to that infection because you have learned it so many times. That is measles, my son. Measles is a viral infection जिसमें स्किन पे लेजन अपीयर होता है, ओके। measles या मीजल्स जो है बेटा एक वायरल इन्फेक्शन है, ओके। इसका जो बेटा रियली सॉरी, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। Vitamin A deficiency is not the way of transmission of this virus. Vitamin A deficiency is not the way of transmission. Vitamin A deficiency may predispose you, it may predispose you to develop the infection, but it is not the way of transmission, obviously. So if your children is like vitamin A deficient, so he may develop the infection much more as compared to another individual having normal vitamin A. इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा? इफ आई डेवलप मीजल्स बीइंग अ 2 year old children, yeah, then I keep on coughing and sneezing and the respiratory droplets entering into the environment, and the person sitting next to me, he can inhale those respiratory droplets having lots of virus, and then that virus enters into his upper respiratory tract and infects the upper respiratory tract. After entering and infecting the upper respiratory tract, it then goes into the blood, and from blood it distributes to periphery and infects the skin. Okay, and on skin it produces maculopapular rashes. Maculopapular, yeah, maculopapular rashes. That means macules and papules appear. Okay, can you see this, beta? ये macules और papules ही है ना? The papules,
the papules which are little elevated and macules which are very much flat. ओके, तो बेटा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये आपके रेस्पिरेटरी रूट में आता है और रेस्पिरेटरी रूट को इन्फेक्ट करके फिर ब्लड में आता है वायरस और फिर वहां से स्किन में जाता है और स्किन पे ये लयन करवाता है। ओके, इसका 10 से 14 दिन का बेटा इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते और बेटा उसके बाद जो है प्रोड्रोमल फेस आता है। प्रोड्रोमल फेस में टिपिकल लेजन नहीं बनता, सिर्फ बच्चे को फीवर होता है, कफ, रनी नोज और कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। उसके बाद एक टिपिकल डिजीज फेस आता है जिसमें क्या होता है, स्किन पे मैक्युलोपेपुलर रेशेस बनते हैं खास करके फेस पे और देन लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, ठीक है, लिम्स पे। अच्छा, मैक्युलोपेपुलर रेशेस बनने के साथ साथ एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मीजल्स का। आई होप यू आर वेरी मच फेमिलियर टू दैट टर्म बिकॉज यू हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स, दैट आर कॉप्लेक्स स्पॉट्स. Complex spots are bright red lions in the buccal mucosa having central dot. Can you see, beta? These are the bright red lions having central white dot. Bright red lion and central white dot. These are complex spot in the buccal mucosa and the characteristic feature of the typical measles. Okay, and yeah, if you do not treat measles, it may sometimes complicate into some very dangerous conditions like encephalitis and subacute sclerosing panencephalitis and otitis media. These are the complications of untreated measles. Okay, encephalitis, subacute sclerosing panencephalitis, and otitis media. Be careful and treat your measles. Okay, yeah, and then okay, how can you prevent it, beta? ताकि आपके बच्चे को हो ही ना। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन आती है बेटा मीजल मम्स रेबीज की, इसका एक शॉट लगता है और शॉट तो खैर 2-3 लगते हैं लेकिन बाय द टाइम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एमएमआर, मीजल मम्स रेबीज, ये वैक्सीन लगा के आप अपने बच्चे को मीजल से बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये डिजीज हो जाती है, ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या लैब्स करते हैं बेटा, हम एक पीसीआर करते हैं जिसकी मदद से आपको वायरस का डीएनए दिख जाता है और उसके अलावा आप एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं, एंटीबॉडी के लेवल कराते हैं आप अपने ब्लड में, क्योंकि जाहिर है बेटा अगर ये वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है तो आपके ब्लड सीरम के अंदर ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट बहुत हाई होंगी and you can detect that high titer of antibody, right? As compared to typical measles, one type of measles is atypical measles, in which you know beta what happens, rashes appear on the skin, maculopapular rashes appear on the skin but without complex spots. What happens in typical measles? Maculopapular rashes on skin and complex spot in the buccal mucosa. But if let's suppose maculopapular rashes occur on your skin and there are no, you know, complex spot in the buccal mucosa, then that is called atypical measles. You know why does this develop atypical measles? It develops secondary to killed vaccine. बेटा भले किल्ड वैक्सीन में वायरस किल्ड हो बट स्टिल इट हैज some sort of infectivity. Due to that little activity, it can produce disease up to certain extent, like atypical rash का बनना स्किन पे और कॉप्लिक स्पॉट का ना बनना. So it is trying to actually produce the disease, but because it is not very much active, so virus is not completely producing the disease. Okay, so this is the concept of killed vaccine and atypical measles. After beta measles, one last viral infection is Tyriasis rosia. You call it Rosia, you call it Rosia. I like the both. Tyriasis rosia. It's a viral infection of the skin beta in which actually let me tell you, it is the viral infection caused by human herpes virus 6, human herpes virus 7. Yeah, human herpes virus 6, human herpes virus 7. And this infection lasts about 6 to 12 weeks. And okay, if this virus has infected you, what occurs on the skin? Number one, a patch appears on your skin called herald patch. And then what happens after this herald patch, subsequent patches appear. There is a little difference between the herald patch which appear first and a little difference in subsequent patch which appear after the herald patch. Herald patch are little larger. They are smaller. Herald patch are more intensely colored. They are salmon pink to dark red.
but they are less intensely colored. They are pink or light brown. They have more pronounced scaly borders. They have less pronounced scaly borders. Okay. Now let me show you. Can you see this page, beta? What type of page do you think it is? It is Herald page or subsequent page? Okay, it is beta larger and it is very intensely colored. It is not salmon pink, but it is red at least, and it is having scaly prominent borders. Prominent scaly borders. So I hope you have decided it. It is better obviously Herald page, but later the subsequent page which occur is going to be little smaller than this, and that subsequent page will be less intensely colored than this, and the subsequent page is having less scaly borders, unlike this. Okay, and where do these legends appear, beta? On the chest and the back. Yeah, bilaterally and symmetrically, dono side pe. By the way, it is asymptomatic by the mercy of God, and it is self-limiting, but still you can apply topical steroids to get rid of this lesion. Topical steroids, your बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, या जैसे कि बेटनोवेट, डर्मोवेट वगैरह आते हैं, और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट बी थेरापी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और टॉपिकल एंटीवायरल्स का ट्रायल दिया जा सकता है, जैसे ए साइक्लोवियर वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा अगर इसके ऊपर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर तो आपको ज़ाहिर है एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक लाइक एरिथ्रोमाइसिन। ओके, so beta, this is all about the viral infections of the skin. Hope you liked it, hope it helped you. Class dismissed.